Current electricity. Define electrodynamics. Define electrodynamics. Electrodynamics are current electricity branch of physics. We deal with study of moving charge through a conductor. Electrodynamics are current electricity is the branch of physics. We deal with the study of moving charge through a conductor. Example in application: the bulb glows due to current. The current that flows through the coil of motor causes it to rotate. Most of the devices in the industry and in our homes operate with current. Define electric current. Time rate of flow of charge when cross section of conductor is called electric current. Time rate of flow of charge when cross section of conductor is called electric current. Electric current averages charge per unit time. Yes, a unit of current is ampere. What is ampere? 1 coulomb charge passes through any cross section of conductor in 1 second. The current is said to be 1 ampere. 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. Nature of charge carriers in a different material. Nature of charge carriers in a different material. उसके बाद जी डॉक्स है। हेलो ब्रो, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए आप कैसे हैं जी। व्हाट इज़ करंट? करंट आ गया जी। नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं पता क्या कर रहा हूँ, CTI जो है ना, जो पाई इसकी तैयारी कर रहा हूँ। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच काजेज द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होते हैं जी, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं जी, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आइंस होते हैं। गैसेस के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आइन। सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। गैसेस के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। free electrons and holes. In gases, the charge carriers are free electrons and ions, positive and negative charge ions. Electrolyte. इस तरह मेटेलिक कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स।
Conventional current. The conventional current in a circuit is defined as and the conventional current in a circuit defined as the current which passes from a point of potential to a point of low potential as limited by the movement of positive charge. This is defined as the current which passes from point of low potential to a point of high potential as limited by the movement of negative charge. हेलो भाई फ्रेंड्स, मोहम्मद इब्राहिम भाई मोहम्मद इब्राहिम, क्या हाल चाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। उसके बाद जी कन्वेंशनली वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोज सच ए करंट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल थ्रू उसके बाद करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल आर नॉट बाउंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in metal are not bound to the individual electron but are free to move in metal। उन्होंने कहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर वो बाउंड नहीं होते बल्कि फ्री टू मूव इन मेटल। इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं ये। करंट थ्रू मेटल व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड। जी कितने खूबसूरत हैं आप यार, मैं शुक्रिया जी, आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सुनाओ, आप कैसे हो? योकोहामा करंट थ्रू मेटल्स व्हेन नो बैटरी कनेक्टेड। करंट थ्रू मेटल कहाँ से हो आप यार? भाई मैं पंजाब से हूँ। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी द एवरेज कांस्टेंट स्पीड विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है जी? एवरेज कांस्टेंट स्पीड विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर से हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितनी होती है? 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड। 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड और 1 मिलीमीटर पर सेकंड। उसके बाद आ गया जी द वेलोसिटी ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल मोशन इज 700 किलोमीटर पर सेकंड। मैं भी पंजाब पाकिस्तान लाहौर से हूँ और आप किस सिटी से हैं? भाई आई एम फ्राम फैसलाबाद। Source of current when two conductors at different potential are connected through metallic wire। मैं कहा कि जब दो कंडक्टर को डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर मेटेलिक वायर से कनेक्ट करते हैं then the current will start to flow from higher potential to lower potential until the potential of both the conductor becomes same, so the current will stop to flow। उस वक्त तक करंट फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इन ऑर्डर कांस्टेंट करंट पोटेंशियल शुड बी मेंटेन्ड विद द डिवाइस नोन एज सोर्स ऑफ करंट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप स्टडी कर रहे हो जाने? जी भाई मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं जॉब्स की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद आ गया जी कांस्टेंट करंट सोर्स। हमारे पास मैनी सोर्स ऑफ करंट है। फर्स्ट है जी सेल, जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट्स
heat energy into electrical energy. Solar cell converts light या sunlight into electrical energy. उसके बाद आ गया जी नॉन रिचार्जेबल प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स रिचार्जेबल बाय पासिंग करंट थ्रू देम. कंटैक्ट नंबर मिल सकता है. क्या क्या करना है भाई, कंटैक्ट नंबर आपने. उसके बाद आ गया जी इफेक्ट ऑफ करंट. डिस्क्राइब वेरियस फैक्ट ऑफ करंट, आल्सो राइट देयर एप्लीकेशंस. Effect of current. The presence of electric current can be detected by the various effects which it produces. Electric current can be detected by any effect, heating effect, magnetic effect, chemical effect. Heating effect, magnetic effect, or chemical effect. Heating effect, magnetic effect or chemical effect. Heating effect, current flows through conductor due to the motion of free electron. Electrons they collide with the atom, so they lose their kinetic transfer rate to the atom of matter. In this way, the vibration kinetic resistance increased, which produces heat in the void, which is H is equal to I square RT, which is equal to आप अच्छे लगे हो. बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी आपका. तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे. उसके बाद जी आ गया जी एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है. Electric heater, toaster and electric iron, kettle, etc. Magnetic effect when the current passes through the wire. जब करंट पास होता है वायर में इससे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ओनली द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट and the distance from the current carrying conductor. The strength of magnet upon the magnitude of the current carrying conductor. Current carrying conductor. Application of magnetic field. Current is used in the detection and measurement of current. मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है कि डिटेक्शन मशीन यूज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. उसके बाद ये केमिकल इफेक्ट. केमिकल इफेक्ट, there are certain liquid through which the electricity can pass some chemical reaction. Certain due to which chemical reaction, the study of this process is called electrolysis. The chemical change produced during electrolysis of liquid are due to the chemical effect. उसके बाद आ गया जी केमिकल मैटर. The process chemical decomposition of electrolyte due to the flow of current. The process chemical decomposition of flow of current is called electrolysis. Main components of electrolysis. Electrolyte, the liquid which conducts electric current is called electrolyte. The liquid the input of electrolyte is called electrode. Now the electrode
The positive terminal of the current source is called the electric motor. The negative terminal of the current source is called cathode. It consists of vessel containing electrolyte and two electrodes. For electrolysis purpose is called voltmeter. The dilute solution of copper sulfate. The method. Electroplating the process of coating a thin layer of expensive metal gold, silver and cheap metal iron. शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद electroplating is the process of coating a thin layer of expensive metal. Electroplating Electroplating क्या है जी? The process of coating a thin layer of expensive metal, gold and silver on cheap metal iron. Electroplating is the process of coating a thin layer of expensive metal, gold and cheap metal iron. Ohm's law, the current flows through directly proportional to pressure and provided the temperature of the conductor does not change. Ohm's law can be expressed as I cross V. I is equal to V bata R. V is equal to I R. Where R is a constant of proportionality. And is called the resistance of conductor. The opposition to the flow of charge to a conductor is called electrical resistance. As a unit of resistance is ohm. Resistance per unit ohm R is equal to V over I. R is equal to V over I. Resistance is said to be 1 ohm when 1 ampere because the potential difference due to potential difference of 1 volt across it and what are the dependence of resistance? Depend upon the dimension of conductor, mean length and area of cross section. Physical state of conductor such as temperature, dimension mean length and area. Stress, pressure of conductor change the dimension and resistance means stress and pressure change the resistance. Stress and pressure change the resistance. इसके बाद ओमी कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर जो भी चले ओमी लास्ट सिचुएशन का ओमी कंडक्टर current and potential difference for omi conductor. The graph must be a straight line where the value of resistance remains constant. This remains constant. Example omi conductor like copper, silver, gold, etc. Copper, silver, gold, etc. A conductor which does not obey Ohm's law. Is a conductor which does not obey Ohm's laws. Non-ohmic conductors. The graph is not a straight line. Constant phenomenon resistance from temperature as the current through the filament is increased from zero. Graph is a straight line. Resistance of filament. The resistance of the filament continues to increase with the rising temperature. Non-conductor P induction diode. Tungsten filament etc. are non-ohmic.
और nominates plus R 3 plus R pair combination listing not it side by side with the and join together substantially control each same the equivalent resistance 2 plus 1 by R 3 plus dot तो आगे आ गया जी पैरेलल कॉम्बिनेशन resistivity can be defined as the resistance of a meter cube of a wire the resistance of a meter cube of a wire the resistance of a meter cube of a wire the resistance of a meter cube of a resistivity can be defined as the resistance of a meter cube of a wire material. It is a property of the material of which the wire is made. The wire is made mathematical form or causal. Inversely proportional to its area of cross section wide. So that glass and water and I was allowed the G level I was इसके बाद आ गया जी रेजिस्टिविटी लेंथ नॉमिनेटर एरिया यूनिटाइजेशन रेजिस्टिविटी डिमांड है द रेजिस्टेंस वायर लेंथ 1 मीटर एरिया क्रॉस सेक्शन section resistivity मीटर इससे यूनिट ऑफ resistivity मीटर nature of material, temperature of the material, temperature of the material, conductance, the resistivity is independent of the dimension of the conductor. It is another lighting property in the conductance is reciprocal of resistance. Whereas the conductance is or simon. So the conductance is simon. Conductive reciprocal resistivity is the conductivity as a unit of meter problem. उसके बाद आ गया जी temperature. The resistance and resistivity of system depend upon temperature. Variable increase the vibration of the atom increase. Vibration of the atom increase.
The reciprocal is all conductivity, photo temperature, personal vitamin fields are the temperature of the other person, increase the probability of resistance of conductor increase, flux permeability and diode, change resistivity and critical temperature is linear over considerable energy. Diode is the addition to the data. Resistivity and critical temperature is linear over considerable energy. Resistivity is not zero at 0 degrees centigrade. Resistivity is not zero. It's the very temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance बताया ऑपरेशन की resistance. उसके बाद आई can do the thing is equal to the and what I resistance resistivity as a unit of temperature coefficient of resistance and resistivity is per Kelvin as a unit of temperature coefficient of resistance and resistivity is per Kelvin. Temperature coefficient of resistance resistivity is per Kelvin. As a unit of temperature coefficient of resistance and resistivity is per Kelvin. As a unit of temperature coefficient of resistance is per Kelvin. Per Kelvin. उसके बाद करो टोटल कार्बन रेजिस्टेंस temperature coefficient of resistivity per Kelvin. Temperature coefficient of resistance and resistivity per Kelvin. Temperature coefficient उसके बाद color code कार्बन color code carbon resistance ceramic rod the substrate with a thin resistive film of carbon is deposited by the color coding system of the band.
chemical code of carbon registers, ceramic rod or cone causes substrate, thin resistive film of carbon is deposited. They are commonly used in electric environment. The first one indicates the first value of the digital sign. The उसके बाद आगे आ गया जी tolerance, the possible variation in the resistance of carbon resistors from marked value is called tolerance.